Hey, how are you? In today's video, I would let you know different ways to ask, how are you? So, before jumping to it, I would like to ask the question, how many ways and how many times do you say, how are you in one day? Frankly speaking, many times. Exactly. So, why we are stick to the same expression all day and every day? So, today's content is making you speak like a fluent speaker, speak like a smart speaker, because all the time, believe or not, speaking how are you is quite monotonous. यार सोचो, हम अपने नेटिव लैंग्वेज को लेते हैं यानी हिंदी, और कोई भी लैंग्वेज होती है, हम कितने तरीकों से पूछते हैं हाउ आर यू, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हो और बताओ. तो क्या इंग्लिश में एक ही एक्सप्रेशन को यूज करें क्या जस्टिफाई करता है? नॉट एट ऑल. So if you want to, become a smart speaker, you have to go with the other expressions. So that will make you different speaker from the audience. So even if you want to crack any kind of interviews, examinations, please, or any interviews, you got to go with that other expressions, because that makes you sounds really different. So before jumping to it, just one thing, be here till end, because all the expressions are very important, very common. That's the reason I have just made this PDF for you. So let's go without any further ado now. So first one, how do you do? All right. So how do you do means the same expression. कैसा चल रहा है, और कैसे हो आप, how are you. So there is nothing difference out, क्योंकि देखो सभी सब्स्टिट्यूशन है तो ऑब्वियसली सबका मतलब तो सेम होने वाला है, बट बोलने का तरीका अलग होने वाला है. ऑलराइट, यानी वर्ड्स अलग होने वाले हैं, बट मीनिंग विल बी सेम आउट. नेक्स्ट वन, हाउ आर यू डूइंग? वेल, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन. एग्जैक्टली, हाउ आर यू डूइंग, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वन अ लॉट. बट what happened is that, how are you doing is a phrase where we are answering, I am doing good. Exactly. So this is what we have been doing up, but this is wrong actually. When you say I am doing good, it means you are doing some task right now which is a good activity. Maybe you are donating something, maybe a social work or something like that, but you don't mean like that. Exactly, you want to say something different. आप बोलना ये चाह रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा चल रहा हूं, है ना, ऐसा ही. तो आपको याद रखना है एडजेक्टिव यूज नहीं करना है. ओके, that's you do not have to use adjective, rather you got to go with the adverb. So adverb is what? Well. So right one is gonna be I am doing well. All right, so I am doing well is the right one. So always remember this one, I am doing well, you have to use when someone is asking how are you doing. That's very important. All right, let's come to the next one. How have you been? All right, so how have you been? What is the meaning of this? Can you see this? How have you been? ये have been कब लगता है? हमने देखा है कि present perfect continuous tense में have been लगता है. Exactly, have been का मतलब कैसा चलता आ रहा है. When you have to use this expression, when, for example, जब भी आप किसी इंसान से मिले हैं, last time, और कुछ दिन बीत जाते हैं या एक दिन या 2 दिन, okay, and after seeing that person, so you're asking, like जब हम पिछली बार मिले थे, okay, like the last time we met, since that time up to the time, how are you doing actually, okay, मतलब आप कैसे चल रहे हैं या फिर कैसा हो रहा है आपके साथ, ठीक है ना. So for example, this is a day, यहां पास इस इंसान से मिले थे आप. Alright, so now you met right now with that man, so you're asking how have you been. So the condition is what? इसका मतलब इस समय से लेके इस पीरियड तक. ओके, हाउ आर यू, कदम. वेरी सिंपल. एग्जैक्टली. तो ये भी एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, एंड यू मस्ट बी यूजिंग दिस. इज वेरी कॉमन एक्सप्रेशन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली यूजिंग अप. नेक्स्ट वन, हाउ आर थिंग्स गोइंग. हाउ आर थिंग्स गोइंग, सी मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली इसको ऐसे भी यूज किया जाता है, लाइक इज, बट दिस इज द राइट वन एक्चुअली. ओके, नॉट इज, बिकॉज दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि यहां पर सिंगुलर वर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पास हमारे पास थिंग्स जैसा वर्ड है. एग्जैक्टली, विच इज अ प्लूरल, सो वी शुड बी यूजिंग आर, बट कॉमन है काफी. हाउ इज थिंग्स गोइंग ऑन ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बट द राइट वन इज हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन. नेक्स्ट वन, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है. वेरी सिंपल, जैसे आप अभी तक पूछते आ रहे हैं ना,
हाउ आर यू, सिंपल उसी का सिनोनिम और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. बहुत ही सिंपल है, इजी, आपको यूज करना है. ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट आर यू अप टू, लवली वन, व्हाट आर यू अप टू. लेकिन देयर इज अ चेंज हियर. व्हेन यू सेइंग व्हाट आर यू अप टू, इसका मतलब होता है व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ. दिस डजंट मीन हाउ आर यू, बट most of the people are actually using this expression in terms of how are you. तो आप use भी कर सकते हैं, frankly speaking, like native speakers. So the meaning is what are you doing. That's why I've written this one. All right, next one. All right, how are you holding up. What is the meaning of holding up? I hope you know this. To hold up, this is a phrasal verb. Exactly, hold up का मतलब होता है जब भी आप कहना चाहते हैं ना कि अपने लाइफ में आप किस जगह है, अभी किस जगह वेट कर रहे हैं, यानी आपके लाइफ में अभी क्या स्थिति है, व्हाट स्टेट इज गोइंग ऑन, लाइक दुख वाला, खुश वाला, और व्हाट एवर. सो होल्डिंग अप इज समथिंग दैट इज फ्रेजल वर्ब, मीन्स वेयर यू स्टैंडिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. ओके, सो सिंपल एक्सप्रेशन है बट प्यारा है. यू मस्ट बी यूजिंग दिस फ्रेजल वर्ब, हाउ आर यू होल्डिंग अप. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, यू कैन यूज इट बाय आस्किंग एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी. हाउ आर यू होल्डिंग अप विथ योर लाइफ, how are you holding up with your work, how are you holding up with your home chores, how are you holding up with your wife, whatever it is. So आप वैसा पूछ सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन, how are you feeling. All right, so most of the people are actually asking me, sir, how are you feeling. We have to ask this one जब कोई अच्छा फील नहीं कर रहा होता या फिर जिसकी तबीयत खराब होती है, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं. बट हाउ आर यू फीलिंग आल्सो मीन्स हाउ आर यू गेटिंग ऑन, और कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में. एग्जैक्टली, तो उस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, अगेन इट्स काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू होल्डिंग अप. हाउ आर यू गेटिंग ऑन. अगेन मैंने फ्रेजल वर्ब यूज किया है, गेट ऑन. आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ गेट ऑन. जब भी हम किसी व्हीकल में बोर्ड करते हैं यानी चढ़ते हैं, एग्जैक्टली एंटर करते हैं, तो उस एक्टिविटी को गेट ऑन बोला जाता है. ठीक है, गेट ऑन मतलब यहां पास इसका मतलब यह होगा कि अपने लाइफ में आप किस जर्नी में हो, यानी कैसी जर्नी चल रही है. ओके, सो हाउ आर यू गेटिंग ऑन, कैसा चल रहा है आपकी जर्नी, आपकी लाइफ का. ऑल राइट, सो यू हैव टू स्पीक द आंसर ऑफ दैट. सो वेरी सिंपल एंड लवली वन अगेन. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ इज द लाइफ ट्रीटिंग यू. सी, सो इसका मतलब ये है कि आर लाइफ आपके साथ कैसा ट्रीट कर रही है. सो वेरी सिंपल. ओके, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू. आई होप द मीनिंग्स आर वेरी क्लियर. Itself you can understand from the words and expressions, so you have to use all these expressions. All right, next one. What's up, our famous one. Exactly, very short and very sweet, lovely, but it's a casual one which you have to use it because in the formal situation you do not have to use this one. All right, so what's up means simple. Okay, like a what's up, कैसा चल रहा है. I'm not going to explain this one. This is easy. What's now? I mean, what is going on at the present time? So you're asking about the present. That's how you're asking what's now. Next one, how is everything? All right. So, कैसा चल रहा सब कुछ? How is everything? Very simple, lovely, nice and short. Long time no see. अब इसका मतलब क्या होता है सर? ये तो how are you का जैसे है ही नहीं है. Well, see. You can say that it's a little different, but इसका मतलब क्या होता है, and when you have to use this expression when you haven't seen any person for long years or for many days or for many months. Okay, so you have to use this one, long time no see. कहाँ थे आप अभी तक. Exactly, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए. तो obviously जब आप ये कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है आप पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, आप कहाँ तक थे, मतलब कहाँ थे अभी तक. Exactly. So this is how this expression is so lovely and I use it very often. And actually if you're gonna see any kind of web series and all, you must be hearing this one and listening this one. Exactly, so you should be using this one. Now next one, howdy, lovely, howdy. So इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं. How are you? Howdy man. Howdy का मतलब ये simple, how you doing? Okay, कैसा चल रहा है, how are you actually. So pretty common when it comes to the native speakers because they are gonna use it. So you have to use it as well. क्योंकि यार इंग्लिश का मतलब ही होता है ना कि कम बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट बोलो. एग्जैक्टली, क्योंकि बार बार तो आपको बॉस से तो बात करनी नहीं है. एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल. तो इसीलिए हाउडी इज द बेस्ट एक्सप्रेशन और बेस्ट वोकैब दैट यू शुड बी यूजिंग अप. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. What's happening? Alright, so what I'm saying, just hear my words. What's happening? I'm not saying what is happening. What's happening?
एग्जैक्टली, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन. व्हाट इज, व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है. इजी वन. नेक्स्ट वन, हाउ आर थिंग्स कमिंग अलोंग. ऑलराइट, सो हाउ आर थिंग्स कमिंग अलोंग, यानी जो चीजें आपके लाइफ में वो आपके साथ किस तरह बिहेव कर रही हैं, यानी वो चीजें आपके साथ कैसे आ रही हैं, अच्छे तरीके से, यानी बैड सिचुएशन में आ रही हैं या गुड सिचुएशन में आ रही हैं. सो सिंपली हाउ आर यू. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, हाउ इज एवरीथिंग. देखो इसी का एडवांस फॉर्म है. हाउ इज एवरीथिंग कमिंग टुगेदर. अगेन द मीनिंग इज क्वाइट सेम. ऑलराइट, कि आपके लाइफ में सभी चीजें कैसे आ रही हैं. ऑलराइट, सो यू कैन यूज द डिफरेंट एक्सप्रेशन कमिंग टुगेदर या कमिंग अलोंग था. नेक्स्ट वन, are you well. So see, here you are asking in a different way, not like a question, but it's a little different. Are you well? Are you well means how are you actually. So maybe you are happy and I have just seen you after so many days and all, so I'm just saying like are you well, या अच्छे हो आप. So you know it's a kind of little in a different meaning. इसका मतलब ये है कि you know कभी कभी ऐसे, अब it depends on the way of asking, how you're asking, you know, are you well, like you know if someone is doing kind of you know having the other behavior like different mad behavior, you can say are you well, अच्छे तो हो आप. एग्जैक्टली, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं. और जब भी कोई इंसान निराश है, यू नो सैड एंड आर यू वेल, लाइक आप अच्छे नहीं हो और समथिंग लाइक दैट. सो यू कुड यूज इन बोथ एक्सप्रेशंस. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन, हाउ वाज योर डे. वेरी वेरी सिंपल वन. हाउ वाज योर डे मीन्स हाउ वाज योर डे, आई मीन कैसा था दिन आपका. तो आप इसका भी आंसर जब देते हैं तो इसका मतलब हाउ आर यू ही है और कुछ नहीं है. ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन बताए हैं, बट मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशंस आर व्हाट विच आई वुड लेट यू नो अगेन कि आप इसका यूज करें प्लीज. पहला तो हाउ आर यू डूइंग, लवली वन. हाउ डू यू डू एज वेल, हाउ हैव यू बीन, इसीलिए मैंने इनको ऊपर रखा है. एंड हाँ, व्हाट आर यू अप टू, ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट. ओके, सो एंड yeah, these are the common words which you must be using up. Okay, long time no see, favorite one of mine. All right, so I hope you gotten something new from this video. So please write down all these things on your notebook and just use it with different people so that it will become very normal for you. You'll be habituated of using all these expressions. तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को हिट करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपका सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन कौन सा है. And with this we will call it a session and I'm gonna see you in the next video. Till then, keep smiling, keep learning and keep speaking. Bye.